Hello everyone and welcome to e-learning classes. Children, today in Civics we are going to start chapter number 2, Vision Set Forth in the Indian Constitution. And in this chapter we are going to study about the Constitution and the silent features of the Indian Constitution. So let's begin the chapter. Children, Indian Constitution के framers जिन्होंने Constitution को frame किया है उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पुअर और वीक सब कुछ ध्यान में रखकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है. The Constitution of India defines the vital and core framework of a country. It also contains the national goals which form the foundation of a country. Now let us study about the silent features of Indian Constitution. First feature is largest written constitution. India has the longest written and most detailed constitution in the world. Indian Constitution के framework में सब कुछ define है. Fundamental political principles, political structure of our country, procedures, powers and duties of the government. It also spells out the fundamental rights, directive principles and the duties of the citizen. Children, when our um, constitution was adopted, it had 395 articles and 8 schedules. Now it has 448 articles, 12 schedules and over 100 amendments. You know, children, it is interesting to note that Constitution of USA originally contained 7 articles. Canada contains 147 articles and the Australia contained 128 articles. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949. However, it came into effect on 26 January 1950, a day selected for its historical significance. नेक्स्ट इज प्रियम्बल. चिल्ड्रन, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में दिया गया है इंडिया, और ये बताता है कि इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट. चिल्ड्रन, प्रियम्बल कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. Next feature is federal structure of the government. India has a federal system of government. That means our country is governed at 3 levels: the central, the state and the local. At the same time, there are 3 organs of government: legislature, executive and the judiciary. और हर लेवल पर इन ऑर्गन्स की पावर वेरी करती है. हाईएस्ट डिग्री की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री टाइप की है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर. इट मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पर 2 हाउसेज हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. पार्लियामेंट के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं and the leader of the majority party in the Lok Sabha heads the government as the Prime Minister. Next feature is universal adult franchise. India has a universal adult franchise. इसमें हर सिटीज़न को राइट होता है वोट करने का जो 18 और 18 से अबव होते हैं. दे कैन वोट no matter what his or her race, religion, language, caste, wealth, sex or level of education. And these people have the power to vote and elect their representative. नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी एडमिनिस्टर करती है जस्टिस, लॉज इंटरप्रेट करती है, हमारे नेशनल राइट्स, नेशनल गोल्स को प्रोटेक्ट करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो यूनियन स्टेट लेवल पर लॉज बनते हैं उनको देखती है थ्रू अ हायरार्की ऑफ द कोर्ट. जो लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर में या कोई अमेंडमेंट होते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट भी कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो सही नहीं हो रहे हैं. Next feature is party rigid and party flexible. There are certain provisions, children, in India which can be amended by a simple majority in the parliament, while there are certain provisions whose amendment requires not only special majority in the parliament but also ratification by at least one half of the state legislature. Next feature is secularism. Children, the preamble states that India is a secular country. This means that there will be no state religion. All religion will be treated equally. The word secularism means Sarva Dharma Sambhav, which means giving equal respect to all religion and culture. At the same time, secularism in India also means non-interference of religion in the government affairs. The Indian Constitution, through its preamble, fundamental rights and directive principles, has created a secular state based on the principle of equality and non-discrimination. In the next video, we will study more about Constitution.
Till then, stay safe.